namaste everyone. Welcome to the Cārvāka podcast. This is your host kushalmehra. आज हम monologue करेंगे. Uh, if I end up cutting this monologue short, I just want to disclose in advance. मुझे थोड़ा बुखार है, so I apologize in advance. अगर हिम्मत हुई तो जितना लंबा खींच सकता हूँ खींचूंगा. अगर नहीं हुई, लगा कि नहीं अभी थक गया हूँ बोल बोल के, तो I don't know how many days have passed by. I've never skipped a workout. uh, I I I think today was one of the rare days that I did not even work out. I feel terrible about that too because it's like a discipline thing for me. But anyways, enough of my sob stories about me having a whiny little bit of fever. And okay, so before we start, as always, I want to thank the members in the last 2 weeks who have joined. So Eco Facts by matlab new something something, then Raj Srivastav, mm, CP1979, AB Desai, Utkarsh, Shivam Gupta, Jatin Pandey, Devesh Parmar, then Punya Shloka, Nivit K. Singh, It's Ujwal, Vivek Joshi. Yeah, this covers the, I think, the YouTube landscape of the new members. And on on Fanmo, I guess it is Kiran, Itagi, Karunesh, Tejas, Sai Kishore, Shivam, Sharavat, Harsh Agarwal. Yep. And I don't even know your name. It is like a big underscore. So you are there, and Vasu Pant. So that covers Fanmo. And on Patreon, Rishabh Goel, Kumar Mangalam, Anurag Angal, Shobhit Singh, and Anmol, I guess. Yep. So thank you very much for becoming a member of the Cārvāka podcast. As you guys know, this podcast is solely a member driven podcast. Uh, the content that comes on the podcast itself, on the YouTube channel or on iTunes and wherever you watch the audio content, is all for free. The reason all of this content is for free is for two reasons. A, I don't want to do ad reads. I Because what happens is, if I do ad reads, then आज नहीं तो कल वो कंपनी आके मेरा, जिसको बोलते हैं ना, कमर कसेगी. And as far as I'm concerned, which is why I designed this podcast on a members only model, where there will be members only content. And I designed two tiers. One I called one seekers, which was basically $5 and below, and I called the other one speak with me, which is $5 USD and above. The reason I have to give $5 is because when I started, I had only started in on Patreon. I did not create the tiers. That's why this mess up is there. Otherwise, if you go on Fanmo on YouTube, you get the tiers. It's clear. Just for Patreon and my mess up, I have to do this. But anyways, having said that, different content for different tiers. For the seekers tier, you get I think 9 books, around 8 to 10 papers, and the current Rigveda discussion. And for the speak with me tier, over and above the seekers tier, you get an AMA once a month, where we just have an off the record conversation. It's a Zoom call, and this month's will be held at the end of this month, 28th of February. It's a Tuesday, if I remember correctly. So if you guys are members of speak with me tier, it will be on Tuesday, 28th February. If you are not, you can join again now, and you can speak with me at the end of the month. Over and above that, you also get access to the understanding and experiencing religion series, which is already covered the entire Valmiki Ramayana, and right now is covering the Manusmriti, and we are going to go on covering more and more and more and more books. So once again, if you really want to support me as an heterodox thinker who pretty much goes and speaks on issues that most people don't want to hear about or don't even care, who does not outrage, who actually mm, uh, tries to push boundaries intellectually, not do clickbait, then please become a member. To me, that is the only way I can sustain this podcast. And I do these monologues on and off because I want to speak about this. So just to give you a brief background as to why I'm doing this.
So in my last, I started socio-political activism or commentary or whatever I want to call it. I think my first tryst with it was 2009, as when I started speaking. Before that, I was only reading, not speaking. So when I started speaking on these things, I would be constantly, whether it was, me going around in Congress circles, whether it was me going around in BJP circles or in communist circles, I have consistently heard, and even RSS circles, by the way, I have consistently heard this line. The line actually is in Hindi. असली भारत गांव में बसता है. This is the line basically, that real India is rural. Now, what do they mean? I have never understood what they mean by it. Most of the times when I hear people talk about this, these are by and large urban people. Sometimes they are semi urban, where they go a bit to the rural area, and they go back and forth and whatever. Very few are really like urban, like people who are born and raised there and they just stay there. This is my experience. So it is one of those lines. I add this line to the silly faffing that we do in our dining rooms. I'll give you examples of silly faffing that we do in our dining rooms. Silly faffing in our dining rooms is, beta, money isn't everything, paisa to haathon ka mail hai. Who says this? People who are relatively financially stable keep yapping and keep saying money isn't everything. Similarly, people who have lived a huge chunk of their life now in urban areas, they came here for pure economic opportunity, or in many cases, some people have migrated for other reasons also. They come here, they live here by choice, by compulsion, whatever be the case, and they just keep whining, and they just say these things. Like, if somebody genuinely believes money isn't everything, they should donate all their money to me, because I believe money is very important. you know Everybody who says this line, asli bharat gaon mein basta hai, real India is rural India, is actually making a very condescending statement. We will get into the data and all of that later on, but I first want to take this statement head on. This is the most condescending statement you can make towards people who are urban और सेमी अर्बन. अच्छा, चलो मेट्रो छोड़ दो, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3. हम लोग इंडियन नहीं है, हम इंडिया वाले नहीं है, हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है इंडिया को, हमने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है. हमने क्या बिगाड़ा है? What have we done that has damaged India so much? What is so unique about rural India that they are the authentic Indians and we are not? When you ask them, they never give that answer because they don't have an answer. Basically, what happens with fluffy philosophy that we use in our dining rooms is, these are things we say that actually mean nothing. They never mean anything. These are rhetorics that we use to please ourselves and maybe somehow please others, because we are somehow designed to be over opinionated and under informed by design. And in the age of social media, तो ये और हो चुका है कि हमको हर चीज पे ओपिनियन देना है. मैं गांव में रहूंगा नहीं, मगर असली भारत तो गांव है और असली भारतीय तो गांव वाला है. नहीं, हम सब हैं भारतीय. भले आप शहर में रहते हो, भले आप गांव में रहते हो. मतलब क्या कहना चाहते हो? और फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा के ऊपर बात करेंगे. द वन थिंग I would like to hear state that even on the definition of what constitutes urban and rural, there is a lot of debate on that. FYI. So, as far as I'm concerned, there is no clarity on what constitutes a rural area. And there was a very good article. See, it's amazing how human memory is. Like, I read things long time ago, and then sometimes I get triggered, and then I remember, अरे मैंने ये स्टडी पढ़ी थी और ये स्टडी का मेरे को इस आर्टिकल के बारे में पता चला था, और फिर मैं वो आर्टिकल ढूंढने जाता हूँ, and lo and behold, the beauty of the internet, the article pops up. So there's this article in 2017, by the way.
It was a very short 3-minute read that eventually led me to a study, and I had read a study also. But so I'm just sharing that article with you guys. So this was how much of India is actually urban. It was a very interesting answer. The honest answer to that question is it depends. And it truly depends, because the criterion is hilarious. It depends on the criteria we use to define urban settlements. Under the rather stringent definition of the census, about a third of India is urban, with urbanized states concentrated in relatively richer southern and western India. But if you believe in what images from satellites tell us about built up areas, a whopping 63% of India is urban, with urban settlements concentrated in the relatively poorer northern belt. Now, if I remember correctly, and I would request you guys to fact check me on this, I think this lighting study based on illumination was done by Vivek Dahija and someone else, if I remember correctly. I could be totally wrong, but मुझे जितना याद है विवेक दहीजा जी ने किसी और के साथ ये बेसिकली इल्यूमिनेशन स्टडीज की थी, और उसके हिसाब से उन्होंने रियलाइज किया था कि बेसिकली इंडिया में ज्यादातर लोग यहीं रह रहे हैं. 63% एक अपर लिमिट है, मगर there are other things also. So India's three-tiered census definition of urban, at least 5,000 inhabitants, density of 400 people per square kilometer and more, and at least 75% of male working population engaged in non-farm activities, was first framed in 1965 by then census commissioner Ashok Mitra. Now, इनकी मैं स्टडी बोल रहा था, इनकी स्टडी जरूर पढ़ना. अगर आप लोगों को पीडीएफ या इजीली अवेलेबल पीडीएफ है, गूगल कर लोगे चिन्मय तुम्बे को. अच्छी स्टडी थी, पढ़ने लायक स्टडी थी. And why it's a 3-minute read, that's why I'm reading the article, so that देखो सीधा मैं उस सोर्स को समराइज करके पढ़ूं, इससे अच्छा मैं पूरी सोर्स ही पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए. So, quote, the problem he was trying to solve was that the Gangetic Plain is a particularly high density belt, says Chinmay Tumbe, an economic historian at the Indian Institute of Management, Ahmedabad. Using just a population or density parameter would have inflated the urban rates, skewing funding priorities away from rural schemes. However, more than 5 decades later, questions are being raised on whether that definition underestimates the urban population, although there is no agreement among urban experts on what the new definition should be. Under the census definition, 31% of Indian population lived in urban areas in 2011. But the share of urban population which lives in towns and cities actually classified as urban and governed by urban local bodies is even lower at 26%. Even if one were to discount the satellite data, just relaxing the census definition and considering settlements with more than 5,000 inhabitants as urban will raise the share of the urban population to 47%. Always remember, this article that I'm talking about is in 2017. We are in 2023, by the way. So the urban flow is only going to increase in the 6-year period, right? So keep that in mind, okay? Keep that in mind, that I'm sharing an article from a while back, but it is very important you keep this in your mind, okay? So I'll go ahead. So so these are some stats they share, alternative estimates based on satellite. You can screenshot this if you want to, and then later on, the article I think might be behind a paywall. I pay live mint, so I don't know, it could be not behind a paywall also. ये नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक साइन इन नहीं किया और ये एक्सेस मिल रहा है, तो मतलब ये फ्री होगा. बट आई एम अ पेड मेंबर ऑफ लाइव मिंट, सो आई रिमेंबर जब ये आर्टिकल आया था तब ये पेड फॉर था शायद, जितना मुझे याद है. One way to check whether a definition of urban is appropriate is to evaluate the correlation between the share of urban population and per capita incomes. The built up area criterion, as measured by satellite images, fails that check. But both the existing definition and the more relaxed 5,000 plus inhabitants criteria seem to meet that test. Urbanization and income levels seem to move together in Indian states. So this is the NSDP figures at 2004-5 prices for 2010-11. This is the spread of that, okay? And this does not change by taking alternative effects of urbanization. So regardless of the definition being used, there is an element of discretion involved in any definition that attempts to strictly delineate rural from urban areas. While experts may disagree on the precise definition of urban, they all agree that it makes sense to view the entire spectrum of settlements from small villages to large urban agglomerations as a continuum rather than in terms of rural-urban binary. Even census definition reflect this continuum as they account for different types of settlements.
And again, this is where India lives, distribution of population and settlement size, blah 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 blah. I'm not going to read the rest of the article now. I will stop sharing this. I would once again recommend you guys to go and read a few studies like the illumination study by Dahije et al. Or Chinmay Tumbe's work, or many other works. But the point is, you can safely assume at least half of India is urban. Half of India is urban. And when, irresponsible socialists, whether they are Congress socialists, whether they are RSS socialists, whether they are non RSS magar pro Hindutva socialists, whatever kind of socialist you are, when they fetishize and fantasize and say things like this, they are basically insulting half of India and calling them not Indian. And they should be called out. And if I'm going to be the only person who's going to stand up in the room and raise an objection to this horrendous classification that real Indians are only rural and some urban people, oh, they are some traitors to the cause, or oh, they by coming to the city and they have literally betrayed some cause. Well, all of you are welcome to leave the cities and go to rural India. Then you are, we are Indians, we contribute to this economy, we clearly are taxpayers, and we have every right to be Indian, and we are, we demand that respect. So stop your stupid fetishization. And what did Ambedkar have to say on rural India? Who remembers the famous Ambedkar quote on villages? I don't know if you guys remember. This was, if I remember correctly, in the Constituent Assembly debates, where Ambedkar had said this. Yes, I think it was on 4th November 1948, where B.R. Ambedkar, during the Constituent Assembly debate, said, quote, "What is the village but a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness, and communalism?" This is what Ambedkar had said during the Constituent Assembly debates. Was Ambedkar wrong, or was Ambedkar right? Now, to give the devil its due, I think Ambedkar is wrong on one issue, where if you talk about um, workforce participation of women, if you go by just absolute numbers, rural women overtake their urban counterparts in participation of labor force during 2017 to 2021. Obviously, there are multiple reasons for that. When it comes to migratory patterns, the men tend to leave the villages and they go to cities. There are basically, even as my experience says, as an entrepreneur of 20 years of running a textile factory, हमारे जो वर्कर होते थे ना, वो 2 साल में 2 बार है ना गांव वापस जाते थे, या मैक्सिमम 3 बार, मगर ऑन एवरेज वो 2 बार जाते थे. एक बार होता था सर्दियों के समय, दिसंबर जनवरी में, जब शादी का सीजन होता था, तब वो शादी के लिए जाते थे. दूसरा समय होता था धान काटना या बीज बोना. कभी कभी बीज बोने के लिए जाते थे. प्राइमरीली दे वुड गो फॉर कटिंग द crop, because that's when the real hard labor is required. So the rest of the time, it was the women who were taking care of the house and the kheti for the rest of the time. So now tell me, is this person who is leaving his agriculture, coming to India, urban India, because that is Bharat na, I mean, ये भारत इंडिया डिवाइड भी मेरे को समझ नहीं आता है कई बार, but ठीक है, I take it on face value. जो जो ये बंदा आ रहा है, तो जब वो विलेज में रहता है वो असली भारतीय है, वो जैसे ही निकल के गांव में आता है मेरी फैक्ट्री में काम करने को, नकली भारतीय हो जाता है क्या? और आपका ये जो अर्बन रूरल डिवाइड का नंबर है, इसीलिए वो 30% का नंबर एकदम थर्ड क्लास है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ लॉट ऑफ दीज पीपल हु आर कंसिडर्ड टू बी रूरल, even in that population, a significant chunk of those people are actually spending more than half the time in urban areas looking for better opportunities where they are paid better, and they send money back to their houses in rural India. So you may not like it, but urban India is literally funding rural India in this scenario. Like it or not, that's the reality. That's point number 2. So what are you going to consider those people who say 8 months in urban India and 4 months in rural India? Are they partially asleep? I don't know. 4 महीने तो गांव में रहे ना, partially asleep तो हो गए ना.
So think before you make these lines. It is very irritating because these are all your stupid socialist utopian ideas, peddled by none other than Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi had a great fetish for villages, by the way. And goodness me, it is so annoying that I can't explain my annoyance with Mahatma Gandhi for that. Gandhi fetishized villages like nothing. And Ambedkar was spot on, because Ambedkar's critique of the village life was basically a jibe at the Gandhian thinking. Because Gandhi's fetishization of village life was nothing but basically fetishization of mediocrity. That's all it was. And there are many other things. There was a very interesting opinion piece or essay written in 2019 by Ramanath Jha, who is a distinguished fellow at the Observer Research Foundation, Mumbai. He works on urbanization, urban sustainability, urban governance, and urban planning. I'll just share the screen for you. But the gist of the article was basically, the tagline was, can urbanization be the panacea for India's caste issues? Well, clearly it is not the absolute panacea for India's caste issues. And even Mr. Jha says that. But the point is, it definitely adds in removing the caste barriers. Because when you are forced to live in conglomerates where you have to work with people of different castes, different religions, different languages, different cultural sensibilities, you tend to loosen up a little. And that's when you become open-minded. Because when you go back to your village, you are only interacting, like it or not, either with your jati circle, because that's all rural India is. It's not like rural India में बहुत सारे जात के लोग साथ में रहते हैं. नहीं, उधर तो और ghettoization है. So when they move to urban areas, they're forced to deal with Muslims, they're forced to deal with Christians, they're forced to deal with SC, ST, Brahmin, whatever you want to call it. So they basically lose that caste identity or that religious fanaticism. Obviously, it is varying in different groups, and I accept that. Otherwise, there won't be any Muslim ghettos in urban India. I'm saying it as I see it. Or there won't be any Jain-only societies in urban India. So I'm not saying it's an absolute situation, but I'm saying it is relatively better because you're forced to do it. Because urbanization beats you into it. The thing with rural India is you are a status quoist. So anybody who fetishizes rural India is basically fetishizing status quoism. I have nothing against innocent people in rural India. But if more than half of your population is still engaged in some way or the other in agriculture, that is not something to celebrate, my dear friends. That is something to be sad about. कि इतना होने के बाद भी हमारी आधी जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर में है, और एवरेज लैंड होल्डिंग इंडिया में अगर मुझे याद है तो 3.4 हेक्टेयर समथिंग है. मतलब वायबल ही नहीं है हमारी लैंड होल्डिंग पैटर्न. इसके लिए हमारी एग्रीकल्चर में इतनी इश्यूज है. तो ये पॉइंट समझो. ये सब बोलने की बातें होती हैं. और व्हेन आई से कि एक्स होने के बाद, अरे मगर, so I'll give you an example. So I was having a AMA, so a member of mine asked me this question कि कुशल भाई, मगर कनाडा में आप जाके देखो, वो जट सिखों में आज भी कास्टिज्म है. हाँ है, मैं कहां डिनाई कर रहा हूं, मगर the exception does not make the rule. This is like saying मैं एक जगह पे गया, वहां पे ओवरऑल सब कुछ अच्छा था, मगर मुझे एक वो लेन मिल गई जहां पे गंदगी है तो पूरा शहर गंदा है. नहीं, अगर आप पर कैपिटा कास्टिस्ट टेंडेंसीज को स्टडी करोगे, अर्बन इंडिया में कम होंगी, रूरल इंडिया में ज्यादा होंगी. These are just plain facts. Whether you like it or not, these are plain facts. And anecdata is never the overall trend line. The problem is people confuse anecdata with the trend line. Never confuse the two. There are trend lines that are the overall trajectory, and then there are anecdotes, and they are anecdotes. So the next time somebody comes up to you and says असली भारत गांव में बसता है, तो उनको पूछो असली भारत की परिभाषा क्या है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पूछना चाहता हूं. हम लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन को, IVC. आपने उनकी आर्कियोलॉजी देखी है ना?
धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, मैं नाम लेते जाना हूं। आपने उनकी आर्कियोलॉजी स्टडी की है ना? पूरी बाउंड्रीज हैं, अर्बन सेटलमेंट्स हैं, रिच पुअर डिवाइड क्लियरली है। गुजरात के तो उसमें क्लियरली पता चलता है। जाइगेंटिक पोर्ट्स हैं। Is the Indus Valley civilization by the current socialist fetishization of rural India is real India? So IVC was fake India. There is no bigger urban settlement than IVC. मिनिमम 100, मैक्सिमम पता नहीं 250-300 शहर निकलेंगे उधर इवेंचुअली जब हम आर्कियोलॉजिकल डिग्स करना शुरू करेंगे। हमारे पास पॉसिटी है रिसोर्सेस के, हम लोग इसके लिए डिग नहीं कर पा रहे। इज आईवीसी रियल इंडिया और नॉट? बताओ मुझे। आईवीसी रूरल नहीं था, वो अर्बन था। उस जमाने का अर्बन था वो। पोर्ट्स होते थे, सब चीजें होती थी। बेसिकली आईवीसी नहीं है ना असली भारतीय, आप यही कह रहे हो ना? तो अंत में मैं फिर से आपको पूछ रहा हूं कि ये ये घटिया किस्म की ये जो बिना बात की लाइन बोलने की जो आदतें हमने हमारी बना के रखी हुई हैं, क्यों बना के रखी हैं? और कौन है ये लोग जो फेटिशाइज करते हैं? और अगर इतना अमेजिंग है तो क्यों माइग्रेशन होती रहती है अर्बन सेंटर्स में? लाइक somebody once told me कि do you think you should migrate back to Punjab? No. I am so glad I was born in Mumbai, an amazing city. I am so grateful to my grandfather who moved out of Amritsar and came to this great city. Better values than Amritsar. अमृतसर में खाना अच्छा है, मैं मंगा लूंगा कोरियर से, मुझे नहीं रहना अमृतसर। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है मुंबई में, नहीं है अमृतसर में। बेटर ओवरऑल वैल्यू स्ट्रक्चर है मुंबई में। इसका मतलब नहीं है कि अमृतसर के लोग बुरे हैं, मुझे नहीं रहना। I'm very happy I stay in Mumbai. And it is time somebody stands up for urban values also. And I am that person who's standing up for urban values. And we are here, we are Indian, and our values are as Indian as rural values. I got no issues with your values, man. But don't say you're the only Indians. And stop fetishizing unviable, third-rated agricultural models where you can't even scale to anything. And you can't even feed your own family. Because if that model was so sustainable, you won't be migrating out of your village. That's the reality of life. Face facts, accept it, and stop fetishizing and destroying those poor villagers' lives. Because all these people, ये कौन होते हैं? टिपिकल 3-4 टाइप के लोग होते हैं। या तो तुम्हारे वो झोला छाप ये होते हैं, झोला छाप सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट जो उधर जाते हैं, या तुम्हारे होंगे ये क्रिश्चियन कन्वर्ट करने वाले जो फेटिशाइज करते हैं, क्योंकि उनको तो चाहिए ये दरिद्रता रहे उधर, गरीबी रहे उधर, ताकि वो उनको कन्वर्ट करे क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि उनके लिए तो वो कस्टमर है। और क्या है, मैं सीधा बोल रहा हूं, प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन के लिए रूरल इंडिया बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेडेटरी प्रोसेलिटेशन का क्या है कि अर्बन इंडिया में रिटर्न फायर मिलती है, रूरल इंडिया में कम मिलती है। अब मिलनी शुरू हुई है थैंक्स टू आरएसएस, वीएचपी एंड मेनी अदर थिंग्स। बट द पॉइंट इज, बिकॉज ऑफ द शियर पॉवर्टी इन रूरल इंडिया, प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन हैपेंस। तो एक तुम्हारे ये मार्क्सिस्ट है, दूसरे ये प्रेडेटरी प्रोसेलिटाइजेशन करने वाले हैं जो बहुत फेटिशाइज करते हैं, तीसरे होते हैं एंटी इंडिया लोग जिनको कोई भी प्रोग्रेस पसंद नहीं है, चौथे होते हैं तुम्हारे ये ट्री हगर्स जिनको ओ अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये लोग बोलते हैं इंडिया में अर्बन सेंटर्स में एयर क्वालिटी खराब है, तो मतलब एयर अर्बन आइडिया ही खराब है। भाई कभी जाके वेस्ट में कोई अर्बन सेंटर में रहे हो आप टोरंटो की एयर क्वालिटी चेक कर लो। भाई आपकी प्रॉब्लम खुद की है, उससे अर्बनाइजेशन में कुछ नहीं है। अपनी बुद्धि ज्यादा लगाओ। सिर्फ हमेशा बेवकूफ बने रहने से सियाने नहीं हो जाते लोग। एक चीज को दूसरे से मत मिक्स करो। इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अर्बन सेंटर्स में ज्यादा लोग रहते हैं, हमको कम एमपीज मिलते हैं, हमको और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। बॉम्बे में एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 से 25 लाख लोग हैं।
कैसे हैंडल करेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? अब बोल दोगे नहीं 6 एमएलए हैं, फिर काउंसिल मेंबर है, फिर भी कम है रेशियो के हिसाब से। वी नीड मोर, या तो एमएलए बढ़ाओ या एमपी बढ़ाओ या काउंसिलर बढ़ाओ, कुछ तो करो। इतने ज्यादा लोगों के लिए एक एमपी, दो तो कर दो, 6 की जगह 12 कर दो, ऐसा कुछ करो। तो स्टॉप फेटिशाइजिंग दिस। आई एम गोना एंड हियर बिकॉज मेरे को अभी बोल बोल के मैं थक गया हूं। बट प्लीज, वी आर ऑल इंडियंस, रूरल और अर्बन both. I respect rural India, but I demand that they also respect urban India. Because let's be very clear, urban India drives this economy. You may not like it, it does. Just like during the farmers protest, वो सबसे frustrating था, ये हमारे अन्नदाता है। हाँ भाई, हम पैसा देते हैं यार। अगर वो अन्नदाता तो मैं वस्त्र दाता था क्या 20 साल तक? नहीं तो मेरे बगैर तो तुम नंगा घूमते थे, क्योंकि मैं कपड़ा दे रहा था तुमको। मतलब क्या बकवास है यार। तो फिर मुकेश भाई क्या है? हमारे डेटा डाटा है, क्योंकि उनके बगैर इंटरनेट का नहीं चलता हमारा मोबाइल पे, डेटा नहीं देते मुकेश भाई तो। मतलब क्या बकवास है यार। अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ ऐसी बात करो। भाई मैं फ्री में खाना खा रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं तुम्हारी सर्विसेज के लिए, और मैं तुमको भी पैसे नहीं दे रहा हूं, मैं तो फाइनल प्रोडक्ट को दे रहा हूं। क्या बकवास लगा के रखी हुई है बिना बात की फेटिसाइजेशन। स्टॉप दिस मीडियोक्रिटी। एनीवेज, चलो अभी सुपर चैट लेते हैं। देखता हूं मैं कितना बोल पाऊंगा, और बोल बोल के मेरा गला सूख गया। अभी मैं थोड़ा और पानी पीता हूं। देव ज्योति, मच लव एंड रिस्पेक्ट टू यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी, गेट वेल सून, थैंक यू। पता नहीं है साला हुआ क्या मालूम है, मुझे 3 दिन पहले बुखार था, ऐसा लग रहा था कि बुखार है, मगर मैंने फिर भी हैवी वर्कआउट करते गया, तो आई थिंक दैट आल्सो स्क्रूड थिंग्स अप। सो नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू, इफ माय बॉडी सेज रेस्ट कर ले, मैं रेस्ट कर लूंगा। मैंने गलती कर दी। Hmm. The reason they say India is in villages, this is Ranjan Mohanty, is because political power lies there. The majority of Lok Sabha seats come from rural areas. अभी change होना है रंजन। I think अभी अगली डिलिमिटेशन के बाद मुझे लगता है अर्बन सीट्स बढ़ाने वाले हैं ये लोग। And I know you are spot on, by the way. So thumbs up. It's all political. The moment the political power shifts, and so all of us, if we want the progress of India, by the way, we should demand more Lok Sabha seats in urban centers, because it leads to better governance, and we need that balance of power between urban and rural, because all kinds of bullshit policies are formulated that make no sense at all, and it is an economic pain in the ass, and it is all because politicians को लगता है अरे मैं हार गया यार, अरे मैं हार गया यार। ये प्रॉब्लम है। We should reduce ये uh, rural seats and increase urban seats. And another big mythology that is being spread is urban में तो कोई वोट ही नहीं करता है। भैया मैंने वोटर रजिस्ट्रेशन की हुई है, डबलिंग ऑफ नेम्स होती है, अर्बन सेंटर्स में भी 65-70% वोटिंग होती है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वोटिंग कम होती है और रूरल में वोटिंग होती है करके, अरे यार यहाँ के वर्कर गांव में जाके भी वोट डालते हैं और यहाँ पे भी वोट डालते हैं, दोनों जगह पे वोट डालते हैं। ये तो हमारे देश में हालत है, मैं जानता हूं ऐसे कितने केसेस को। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, अर्बन सीट्स बढ़नी चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर तुमको लगता है ना इतना बड़ा प्यार है तो जाके गांव में रह लो। असली भारत तो गांव है, आईवीसी। अरे वाह, तुमने मेरे मन की बात कह दी। has left the chat. This is Agotus Iro. Abhiram Shanbog. Also, whether these articles consider the floating population who keeps traveling from urban to village and vice versa. So the Chinmay Tumbe study, Abhiram ji, it did consider this migrant labor issue, like I explained it too. And it is very hard. Like they make estimates ki
And honestly, like, I don't know if a person stays half and half, like 6 to 7 months in an urban center and the rest of the time in a rural center. What would you consider them? Urban or rural? That's the whole. That's the whole point. Like, it's very hard to decide कि कौन सा अर्बन है कौन सा रूरल है. चलो, और तो कोई मेरे को दिख नहीं रहा है. मैं फैनमो पे चेक कर लेता हूँ. आई डोंट थिंक वहां पे कुछ आया था. पहले पेड क्वेश्चंस देख लेता हूँ. नो, तो यूट्यूब के क्वेश्चन है. चलो, I'll go through a few of your chat questions now. What is your take on Ilhan Omar being thrown out of the Foreign Relations Committee, given that she has given a lot of negative comments on both international and domestic and international stage? As far as India is concerned, Ilhan Omar's existence and non-existence doesn't really matter that much. The American government is beyond that, but who cares, honestly? I think you're giving her too much importance. I really don't care about the squad or all these people. I think I don't know how they affect India. I mean, they are signaling. This is like, someone in India, local MP from Mumbai, talking about America. Who cares? Seriously, who cares in America? तो हमको भी कभी कभी who cares बोल देना चाहिए. उनको भौंकने दो. I am definitely for urbanization, but our cultural essence should be preserved. So you preserve it in your house in an urban center. Who's stopping you? Who's stopping you? When you moved to an urban center, did somebody put a gun on your head and told you that, how dare you? Nobody did. Nobody is stopping you from preserving your culture and essence, my dear friend. Go ahead. Okay, Srijan, why do you say that Indian diaspora members should lobby the right in the English speaking countries? Is law and order not enough in these places? I have less knowledge of politics. Well, the reason the Indian diaspora should lobby the right wing is because they've never done it. We need balance of power. We need representation in both parties. And two, the left is completely anti Hindu now. They are literally anti Hindu. I don't get a lot of fun making this statement. अब मैं क्या करूं? अगर हो गए हैं तो मैं क्या करूं? They make absurd claims. Aviral, have you seen the signs of urbanization in tier 2, 3 cities like Delhi, NCR, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, which is really important because our big cities are seeing population. In fact, Aviral, let me tell you, in terms of comparative analysis and sheer numbers, as in, अगर हम quality of life compare करें, I think now tier 1, tier 2 cities, like a lot of my friends say Pune has a much better quality of life than Mumbai. And you know what? I hear them because traffic issues, etc., etc. So, but Pune is also an urban center. It is not rural. So, you are absolutely right. I think what we should focus on is building more cities. We need, like, I think the Prime Minister's vision is like 100 cities more. I think even 100 is not going to be enough for us. We need like 200, 300 bustling urban centers which have top quality life, good quality air, but we're not doing it. Pikachu man, what is the scope of becoming an annadata in India? It is a good time to become one. Tax देना नहीं पड़ेगा और 25 दिन में पैसा डबल. एक काम करो, आ जाओ,
खरीद लो 100 एकड़ जमीन और बन जाओ अन्नदाता। देख लो सारा जो ये तुम्हारा भूत है, बिकॉज आई नो वेर यू आर फ्रॉम, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज यू एंड आई हैव मेट यू। तो एक काम करो, सारा भूत निकल जाएगा 2 मिनट में। आ जाओ एक बार ट्राई करो अन्नदाता बनने की। जो भी तुम्हारा दाता बाता है सब फट के हाथ में आ जाएगा, फिर तुमको असलियत पता चल जाएगी और फिर तुम भाग के वापस तुम जहाँ रहते हो वहां चले जाओगे। भारत गांव में बसता है सिर्फ शादियों के मौसम में। ये बढ़िया है। So funny. Okay, there's a question on Fanmo. Let me take it. You guys do realize, right? If you ask the same amount question on Fanmo, you actually get more words. So I don't mind taking the question on Fanmo. On increasing more seats in urban areas, what are your thoughts on making big metros a union territory? Will it make them more governable? There were rumors about. Look, I don't think so. Mumbai needs to turn into a a union territory. Maybe what Mumbai needs is a elected mayor. We need that. I think Milind Devra from the Congress has been talking about an independent mayor for a long, long time, but obviously nobody wants to listen to the one sensible thing Congress is one on and off say. And Milind is a good man. I like Milind Devra a lot. Full disclosure. मिलिंद ने अच्छी बात कही थी, मगर कोई सुनने नहीं वाला बॉस मिलिंद की। ना बीजेपी में सुनेंगे ना कांग्रेस में सुनेंगे। कार्तिक शर्मा on YouTube has asked, in Gurgaon only sector 14 is not built around a village, still Gurgaon won't be deemed as rural. When Yogendra Yadav lost 2019 Lok Sabha Gurgaon seat, his first public comment to voters was, are you guys stupid? See what I don't know. ये मस्त है ना। अभी क्या बोलूं मैं यार आपको, ऐसे ही होता है। थोड़ा पानी पी लूं। कुशल थंबनेल में ग्वाला लग रहा है। मैं दैट वाज माय होल पॉइंट, राइट? अगर असली भारतीय गांव में रहता है तो मैंने गांव वाले के ऊपर मेरी फोटो चिटका दी, अब मैं भी असली भारतीय हो गया। दैट वाज माय होल पॉइंट। We have this argument here in the West as well. People romanticize rural life as getting in touch with nature, not realizing it hurts to. अरे यार वो गोबर की कितनी स्मेल आती है, कभी वो नोट किया है? रूरल अमेरिका से ट्रैवल करते हो, आई एम श्योर आपने ये किया होगा। वो टट्टी की स्मेल आती है मेरे को तो उधर। इंडिया में अलग बात है, हमने वो टट्टी की स्मेल हर जगह दे दी है, मगर अमेरिका में भी टट्टी की स्मेल आती है हाईवेज में। और जो अमेरिका वाले इसको देख रहे हैं वो समझेंगे, तो लाइव स्ट्रीम में एक्नॉलेज करना ही है। अगर कभी रूरल बेल्ट में अगर ऐसे ट्रैवल करोगे तो आपको वो टट्टी की स्मेल आई होगी। कुशल हेट्स सोशलिज्म मोर देन मैं सेक्युलर हूँ। भाई मेरे को सेक्युलरिज्म इन इट्स असली फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सोशलिज्म से मुझे सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। रोशन ने एकदम सही बोला, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म एंड अ कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। मुंबई में यू डोंट इवन नो। और यार किसने ये बकवास थियरी चेप दी है कि आपको अपने नेबर नहीं मालूम मुंबई में? मतलब कुछ भी बोलते हो यार, कुछ तो सोच के तो बोला करो। किसको नहीं मालूम? मुझे मालूम है, मेरे सारे नेबर, मुझे मेरी बिल्डिंग में जो रहता है सब मालूम है। वो बिल्डिंग में छोड़ो, 3 बिल्डिंग में भी मालूम है कौन रहता है। यार कौन हो तुम लोग यार? कौन सी दुनिया में रहते हो यार? मतलब नेबर नहीं मालूम। और क्या करना है इतना जान के तुम्हारे नेबर को? तुमने उसके घर में जाके रोटी खानी है रोज? अपना काम करो ना बैठ के। पता नहीं क्या है। अविरल,
Kushal, can you please invite Sanjeev Sanyal ji on your podcast regarding building cities, urban centers in India? He पूछता हूँ मैं संजीव से। संजीव, पहले तो संजीव की बुक ही डिस्कस कर लें जो अभी आई है, डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है, इवेंचुअली हो जाएंगी। तो पहले उस पे फोकस करते हैं। MSPs are essential, but this form machismo about it is sickening. आदित्य तिवारी ऑन फैनमो। अब मैं क्या करूं यार, मतलब MSP में भी यार ऐसा नहीं है। आई थिंक गुलाटी साहब के पेपर्स पढ़ो थोड़ा। ही इज इंडिया फॉरमोस्ट एक्सपर्ट ऑन MSPs एंड ऑल एग्रीकल्चर। आई थिंक यू शुड read it. In a city like Mumbai, half your life will pass waiting in traffic. I don't think so. Half, maybe 25% of your life. अमृतसर मुझे क्यों तोड़ा? ओ यार क्या है उधर, मेरे को एक बात बताओ। खाना अच्छा है वो मैं मानता हूँ। मैं अभी तो केसर के ढाबे का भी खाना कोई पहले जैसा रहा नहीं। मतलब क्या है अमृतसर में, क्या है उधर? गोल्डन टेम्पल में जाऊंगा नहीं, उधर भिंडरन वाले की फोटो देखूंगा या किसी और टेररिस्ट की। एक लोटस मंदिर है उधर चल जाऊंगा। जलियांवाला बाग में तो मेरे अपने फैमिली मेंबर का नाम है। लिटरली इमीडिएट फैमिली मेंबर मारे गए थे जलियांवाला बाग में। उधर जाऊंगा, थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगा। बाकी है क्या अमृतसर में, मेरे को एक बात बताओ ना, क्या है? खाना अच्छा है, जाके खा लो यार। क्या रहना है तुमने उधर? ऐਵੇਂ ही यार, पता नहीं। जिसको रहना है रहे, मेरे को मत बोलो। आई एम ईटिंग अमृतसरी कुलचा व्हाइल वाचिंग दिस। बराबर से टट्टी नहीं आएगी तुमको। अभी बॉम्बे में भी मिल जाता है वैसे अमृतसरी कुलचा। चेंबूर में जाना, साईनाथ ढाबा गोल्फ क्लब है ना, उसके पास में एक गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर को एकदम ऑपोजिट एक छोटी सी रेकड़ी है, उसके बाद चल जाना, जाके खा लेना उसके पास। अच्छा बनाता है कुलचा। कुशल इज रिवर्स सोनू सूद। वो गांव से बस भर के लोगों को शहर भेजता है। अरे भाई, क्यों रहना चाहते हैं वो लोग शहर में? वो भी तो सोचो। अगर मैं बस भर के भेज रहा हूँ, वो आ भी तो रहे हैं। नया वेरिएंट आया कोविड का, तो क्या हो गया? आगे बढ़ो लाइफ में। Should the definition of rural India be changed given the basic infra improvement in the I definitely think what ये 1961 की जो घटिया definition को लेके हम लोग चल रहे हैं, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। कुशल भाई, संगम एरा पर एक पॉडकास्ट हो जाए। अरे यार, बिलीव मी, माय वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट रिग्रेट्स इन माय लाइफ वाज कि संगम एरा के ऊपर पॉडकास्ट मेरे को जिनके साथ करनी थी, उनका देहांत हो गया। ही पास्ड अवे एंड आई ऑलवेज विल रिग्रेट दैट। बट अभी आई आई विल डू इट। मैं अरविंदन को रिक्वेस्ट करूंगा। आई डोंट नो इफ अरविंदन विल एग्री टू डिजाइन अ स्पेसिफिक पॉडकास्ट ऑन द संगम एरा लिटरेचर, बट आई विल रिक्वेस्ट हिम। मगर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आई हैव टू फ्रेम द पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। ओके जी, आदित्य तिवारी ने क्वेश्चन पूछा है। इट्स सैड व्हाट अमृतसर्स बिकम। सौब वाले क्या इन जीटी फेल्ट बिट्रेड, पता नहीं। ओके, इफ यू फील बिट्रेड तो ठीक है यार। अभी look, I have nothing against Amritsar. I'm not gonna live there. My ethnicity is Amritsar. It sucks. Okay.
Good for them. Hope they get an IPL team. I don't know what their name will be. Amritsar Kulchas. This is a very good question. If the connectivity between rural and urban area with respect to trade, will it solve the? I think that is the key. जब ये अभी ये जो मुंबई दिल्ली की नई हाईवे बन रही है, जस्ट इमेजिन करो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। इंडिया में आज लोगों को बहुत बड़ा रीजन कि आप सब अर्बन सेक्टर्स की तरफ भाग भी रहे हो, एक तो जॉब्स होते हैं, दूसरा कनेक्टिविटी इश्यूज है। जब हम कनेक्टिविटी इश्यूज सॉल्व करेंगे ना, समझ लो अगर आपको मुंबई पुणे, अगर ये वंदे भारत एक्सप्रेस अभी शायद चालू हो रही है, 1.5 घंटे में पहुंचा देगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, लोग डेली कम्यूट करेंगे ना, पुणे में रहेंगे, मुंबई में आएंगे, काम करेंगे। ये सब चीजें भी होती हैं। सो यूएस इज 82% अर्बनाइज, वी नीड दैट लेवल। अरे यार अभी वो तो जब पहुंचेंगे पहुंचेंगे, अभी क्या बोल रहे हो यार। If you were a voter in the USA, for which party would you vote for both in state elections? If I was living in Florida, I would vote for the Republicans. If I was living in California, I would definitely vote for the Republicans. If I was staying in Houston, I would vote for the Republicans. These states I understand. Other states I can't comment. I would look at the candidate, I would study the candidate, yeah, but I would definitely vote libertarian more. बट जिस स्टेट में मैं रिपब्लिकन वोट करने में कंफर्टेबल हूँ, मैंने आपको बताया। बाकी मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा लिबर्टेरियन हूँ, अमेरिकन राइट से मैं इतना नहीं हूँ। मगर कनाडा में मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आई वुड वोट फॉर द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा वेरी कंफर्टेबली। पूप स्मेल, वी डोंट कॉल इट टट्टी। अरे टट्टी की स्मेल आती है ना, मगर तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब वो हाईवे की तरफ जाते हैं, जरा भी शहर से दूर जाते हैं कनाडा और अमेरिका में, और टट्टी की स्मेल आती है, वो क्यों आती है? ओके, ए आशुतोष कुमार, do we need all rural India to become urban one day? Wouldn't it be good they stay rural but in a hybrid way? Like, look, the point is that if you are in rural India, you have a fantastic job where you're getting paid 50,000 to 100,000 a month. You have great roads, water, good schools, good hospitals, good internet facilities, everything. You don't need to move. But the point is, you don't have those things and no jobs. What kind of असली, मतलब when somebody says असली भारत गांव में रहता है, तो बेसिकली मतलब असली भारत ठुका हुआ है। तो बेसिकली दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ठुका हुआ रहना इज बीइंग असली भारत। कभी जाओ ये तलासरी और वो एरिया में जाओ आप, महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ, सारोटी, वागाड़ी, पालघर एरिया में, उधर सिर्फ कासा में एक हॉस्पिटल है भाई, जो थोड़ा बहुत डिसेंट है। वहां जाके आपको आपका इलाज कराना पड़ता है। वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी होती है तो भी कासा में एक सेंटर है, जहाँ पे रामकृष्ण मिशन थोड़ा बहुत चला रहा है, वहां पे जाके आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। आप यार कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कुछ होना भी तो चाहिए उधर, पहले बनवाओ तो सही। मुंबई हैज अ ग्रेट नेबरहुड ट्रेडिशन, इट्स सीन ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी। भाई अभी तो लोकल नेबरहुड की गणेश चतुर्थी बंद हो गई है, नहीं तो मुझे याद है मेरे बचपन में उसके रीजन ट्रैफिक है ऑनेस्टली, और वो बंद भी होनी चाहिए थी। मगर आज भी यार गणेश चतुर्थी के टाइम पे, मैं तो पंजाबी हूं ना, मेरे घर वालों में कितने घर में, एक दो तीन चार लोग घर पे गणपति रखते हैं। और ट्रेडिशन होती है, आपको मालूम है, सबको घर पे जाना पड़ता है एक दूसरे के गणपति के दर्शन करने। तो हमारे जैसे लोग भी जाते हैं। तो यार कौन ये, मतलब नहीं, कल्चर तो सिर्फ गांव में होता है, हम तो सब यहाँ पे झुंझुना बजा रहे हैं। और ये भी बड़ा अजीब है, मतलब अर्बन, चलो कल्चर अलग होगा अर्बन वाले का, मगर वो कल्चर नहीं है। कल्चर सिर्फ जो तुमने डिसाइड कर दिया है, वो बस वही कल्चर है। बाकी कल्चर कल्चर नहीं है।
इज द ऑब्सेशन विद गांव ड्यू टू गांधीज इकोनॉमिक बिलीव्स? नहीं, ये सिर्फ गांधी नहीं है यार, इट इज बियॉन्ड गांधी. गांधी ने तो इसको एक आर्ट फॉर्म बना दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब गांधी का तो ऐसा था, तो स्वैग के साथ मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट करो. उनका तो यही था ना. शुक्र है अंबेडकर ने उनको किया, नहीं तो क्या क्या हमको झेलना और पड़ता था उनके फेटिशेस के लिए. सत्यानाश हो जाना था हमारा. डॉक्टर नागास्वामी, यस, मैंने उनकी किताब पढ़ी थी. पूप बोलने से परफ्यूम की स्मेल आ जाएगी क्या, पता नहीं. उनकी बातें वही जाने, जो पूप को सूंघ के बड़ा लुत्फ उठाते हैं. भाई वो वैदिक सोसाइटी रूरल, अगर आप ऋग्वेदा को पढ़ोगे ना तो उसके कंटेंट एनालिसिस से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि वो रूरल है. इट इज रूरल एंड अर्बन बोथ, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, एक नहीं की गई है. तो आप उसके बेस पे कैसे आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो इधर वे, वो मुझे नहीं मालूम है. उसमें शिपिंग और पोर्ट और वाटर एरियाज ये सब भी बात की गई है, तो वो रूरल है कि अर्बन है. वॉरफेयर की बात की गई है, वो रूरल है कि अर्बन है. पता नहीं उसको क्वालिफाई कैसे करते हो आप. समझना है तो मेरे साथ पूरा ऋग्वेदा का सेशन ज्वाइन कर लो, मेंबर बन के आप खुद का कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना. टोरंटो एयर क्वालिटी किसी ने चेक किया, 24 गुड. मुंबई 157 अनहेल्दी. वो भी शहर है ना टोरंटो में. अच्छा भाई, अभिजीत त्रिपाठी, टोरंटो की पॉपुलेशन भी चेक करके लोगों को बता देना, और ग्रेटर टोरंटो दोनों टाइप कर देना इधर, ताकि लोगों को पता चले. कम लोग भी नहीं रहते उधर, बथेरे लोग रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं. Hmm, it seems I've answered all your questions. Let me check again. क्योंकि अभी मैं बोल बोल के थक गया हूँ, ऑनेस्टली मेरा गला दर्द हो रहा है अभी. Yeah, I think I've covered all your questions. Yeah, I think. चलो चलो, आई विल. कब हो रहा है ऋग्वेदा सेशन एंड विच, यू हैव टू बिकम अ मेंबर. वंस यू बिकम अ मेंबर, कीप रीडिंग द पोस्ट. इट हैपेंस एवरी संडे. वेरी सिंपल. चलो, आई विल शट डाउन. आई एम सॉरी, आई यूजुअली extend it by 30 more minutes, but अभी मेरे में एनर्जी नहीं है. आई वुड लाइक टू गो एंड रेस्ट. आई डोंट वांट टू टॉक. स्केलेटन मास्टर किलर बॉयकॉट बॉलीवुड फॉर एवर. महेश भट्ट इज अ ट्रेटर टू दिस कंट्री. ठीक है सर. ओके, डू यू लाइक द न्यू बजट? या बजट इज गुड. मैं बजट की पॉडकास्ट कर रहा हूँ अगले हफ्ते, सो तभी बजट के बारे में देख लेना. एनीवेज गाइस, एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस. अमृतसर वालों, बुरा नहीं मानना, खाना बहुत अच्छा है तुम्हारा, मगर मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ. और आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू लाइक मुंबई. यू कैन शिट ऑन मुंबई ऑल द टाइम, एंड आई डेफिनेटली सजेस्ट अमृतसर कुलचाज एज एन IPL टीम. But nothing but love to all my Amritsar fellows. But yeah, I'm not staying there. So, as always, thank you very much for your support. Please subscribe to the Cārvāka podcast YouTube channel. और यार लाइक करो वीडियो और सब्सक्राइब करो चैनल को. जितना जल्दी ये 1 लाख पे जाएगा उतना अच्छा होगा. तो सब्सक्राइब तो करो चैनल को. और ऑडियो पे भी जाओ, वहां पे iTunes पे भी रिव्यू डालो, Spotify पे भी करो. आगे बढ़ाओ पॉडकास्ट को, ताकि मैं और लोगों को खिंचा सकूं अपने विचित्र विचित्र विचारों से. बाकी
Agar real mein, if you want to support this podcast, like I always say, please become a member, whether on Fanmo, whether on Patreon, whether on YouTube. That is the key source of keeping this podcast alive. So please, if you want to make sure that this podcast stays alive and I keep talking about a variety of issues which you get for free on the podcast, please become a member, and you get members content anyway over and above that. So please support the podcast over there. That is how I sustain myself. You can also buy the merchandise by going on kushalmehra.com or on Kadak merch, or sending your donations to kushalmehra at ICICI. I will see you guys next time. Until then, namaste, take care, bye.